Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss respiration in earthworm. So let's move to the classwork. So dear students, chapter number 13, gaseous exchange, and we were discussing the respiratory organs in representative aquatic and terrestrial animals. In the previous lecture, we have discussed the properties of respiratory surfaces in animals and the most simplest animal, that is a diploplastic animal, which is hydra, the respiration in hydra. तो उसको हमने डिस्कस कर लिया. अब मूव करते थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ, मतलब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं एज यूजुअल. तो सबसे पहले सिंपल एक एनिमल के अंदर डिस्कस किया. नाउ उससे कंपैरेटिवली जो है एक बेहतर एनिमल है, उसके अंदर रेस्पिरेशन हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ respiration in earthworm. So dear students, earthworm, it is basically a triploblastic animal. It is triploblastic. And coelomate. We have discussed in very detail in chapter number 10. Clear? So it's a triploblastic animal. इसकी जो बॉडी वो 3 जर्मिनल लेयर्स से मिलकर बनी थी और ये सीलोमेट है. ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी हमने 3 तरह के एनिमल्स को डिस्कस किया था: एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट्स. तो सीलोमेट किसे कहते हैं? विच हैव ट्रू बॉडी कैविटी. और ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है? विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर? सो जहाँ तक बात है रेस्पिरेशन की, हम बात यहाँ पर अर्थवर्म की रेस्पिरेशन में के हवाले से करेंगे. सो it is the earthworm has no specialized organs and organ system for respiration. Or gaseous exchange, like hydra. जैसे कि हाइड्रा के अंदर भी कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम मौजूद नहीं था. क्लियर? बट द डिफरेंस इज दैट but it is more complex. It is more complex than hydra and a little bit better respiration. Clear? इसके अंदर जो respiration है वो थोड़ी सी बेहतर है. So let us see how the respiration in earthworm takes place mainly through the skin. Mainly through the skin. ये हम सीखे उसके लिए मार्क कर लें. क्लियर? तो स्किन के जरिए हो रही है इसमें. The skin has
the skin is provided with rich capillary network and is always kept moist by तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि पहली चीज उसमें लार्ज सरफेस एरिया, चूंकि ये इसकी स्किन पूरी बॉडी पे मौजूद है तो सरफेस एरिया भी है। दूसरी हमने बात की थी बहुत अहम कि वो मॉइस्ट होना जरूर चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर जरूर होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होना है। सो इट इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट, हर वक्त वो मॉइस्ट रहेगी। जैसे ही वो स्किन इसकी मॉइस्टनेस उसकी खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो ये सफोकेट हो सकता है, इसके अंदर इसको सफोकेट होने से इसकी डेथ हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट। इसमें दो फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये मॉइस्ट इसको रखा जाता है। क्लियर? अच्छा, तीसरे पॉइंट भी देखिए यहाँ पर, तीसरी प्रॉपर्टी पे आ गई कि रिच कैपिलरी नेटवर्क। क्लियर? तो आपको होपफुली वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिटरली क्लियर हो गया जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की। क्लियर? सो इट इज केप्ट मॉइस्ट बाय नंबर 1 the epidermal mucous gland cells which secrete mucus, and number 2 is the coelomic fluid, चूंकि ये coelomate है, so coelomic fluid exuding from dorsal pores. So the dorsal pores, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो स्किन है इसकी वो मॉइस्ट रखी जाएगी। क्लियर? ऊपर वाली सरफेस, तो एक तो इसकी जो स्किन है उसमें सबसे ऊपर वाले टॉप लेयर अभी आपको दिखाता हूँ वो क्यूटिकल कहलाती है। क्यूटिकल के नीचे इसकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं द म्यूकस ग्लैंड सेल्स जो मुसलसल म्यूकस को सेक्रेट करते रहेंगे और उसके ऊपर वाले सरफेस को, डॉर्सल सरफेस को जो है वो मॉइस्ट रखेंगे। और दूसरा, चूंकि ये सिलोमेट है, इसके अंदर सिलोम मौजूद है, तो सिलोम रिस रिस कर जैसे एक्सूडेट की शक्ल में वो बाहर को निकलता रहेगा ऊपर वाले सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे, और वो भी हेल्प करेगा इसको मॉइस्ट रखने में। याद रखिएगा, अगर ये मॉइस्चर इसका खत्म हो गया तो ये सफोकेट हो जाएगा और इससे इसकी डेथ हो सकती है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, उससे आगे मजीद आगे मूव करेंगे। So you also have to draw it in order to clarify the topic.
and over here beneath this there is the circulatory system. इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 में भी डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे इन द कंपैरिजन बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो इसके अंदर तो मौजूद है दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एज इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स. दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज. ओपन के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, पूरी बॉडी में एज इट इज ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा होता है, डायरेक्टली बात कर रहा होता है टिश्यूज को. जबकि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड उन वेसल्स में मूव करता है. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा टू द सेल्स और द टिश्यूज. सो इट ऑल्सो पोजेसेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. और उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसके पास मौजूद हैं 4 से 5 पेयर लेटरल हार्ट्स के. ये जो आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसके हार्ट्स हैं, इनको लेटरल हार्ट्स कहा जाता है. पेयर्स होते हैं, ठीक है, 4 से 5 पेयर्स. चैप्टर नंबर 14 में भी डिस्कस होगा. और ये ऊपर इसके ब्लड वेसल मौजूद हैं, यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स हैं. ये स्किन के अंदर कैपिलरीज मौजूद हैं. देयर इज अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ओवर हियर. और इसी तरह से इसके नीचे वाले सरफेस पे भी. सो दीज आर द ब्लड कैपिलरीज ऑन द लोअर सरफेस. और डियर स्टूडेंट्स, इसको लेबल करते हैं. तो यहाँ पर ये बेसिकली ये इसकी सारी दैट इज इट्स क्यूटिकल. यहाँ पर से ये कट सेक्शन है, ठीक है, सिर्फ इतना सा कट करके दिखाया गया. तो उसमें जैसे दो आपको लेयर्स नजर आ रही हैं. तो ऊपर ये क्यूटिकल है और उसके नीचे ये वाली दैट इज एपिडर्मिस. ठीक है. और यहाँ पर मौजूद है इसके ये सारे यहाँ पर ओपनिंग्स हैं, द ओपनिंग्स ऑफ एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड सेल्स. क्लियर. और ये इसकी ऊपर वाली सरफेस है, ये जो ऊपर दिखाई गई दैट इज बेसिकली द डोर्सल सरफेस. और ये नीचे वाले ये वाले इसकी ये सारी नीचे वाली दैट इज द वेंट्रल सरफेस. क्लियर. और these are the lateral hearts. Or this one is the ventral blood vessel. और ये ऊपर वाले सरफेस पे ये जो उनसे मौजूद है ये वाली, दिस वन इज द डॉर्सल ब्लड वेसल. ये मेन ब्लड वेसल है इसकी. चैप्टर नंबर 14 में भी डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में. डॉर्सल ब्लड वेसल. क्लियर. और दरमियान में इसकी बॉडी के टिश्यूज मौजूद हैं. और यहाँ पर ये capillaries, network. These are the capillaries. Clear? So students, this is the structure of the earthworm. In which it is, here it is represented the respiratory surfaces. तो यहाँ पर ऊपर ये respiratory surface को wet रखा जा रहा है. तो this is I'm showing the wetness or moisture. ये हर वक्त ऐसे moist रहेगी. और dorsal और ventral surface की तो आपको स्टूडेंट्स पहले से बता भी चुका हूँ पहले से. ये इसका mouth याद रखेंगे, that is the mouth.
तो डॉर्सल और वेंट्रल, ये पहले भी बात हो चुकी है, दोबारा आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। ये सेगमेंटेड वर्म है बेसिकली, अर्थवर्म और ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट। तो डियर स्टूडेंट्स, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सम का मतलब है बैक और वेंट्रल का मतलब होता है बेली। ऐसे जानवर जिनकी कमर और उनका पेट, बेली वाजे हो, ये उसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, डॉर्सल फॉर द बैक एंड वेंट्रल फॉर द बेली सरफेस। तो हमारे जैसे बेली ये सामने वाले साइड पे है, पेट, तो ये हमारी वेंट्रल सरफेस है, और पीछे कमर हमारी वाजे है, ये हमारी बैक है, मतलब कि ये हमारी डॉर्सल सरफेस है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से बताया गया डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम फाइलम कॉर्डेटा में, क्लियर। लेकिन ऐसे एनिमल्स जिनकी बैक और बेली वाजे ना हो, जैसे कि अर्थवर्म है, ये इन्वर्टिब्रेट्स है, इनकी बैक और बेली, जिन ऐसे एनिमल्स जिनकी ये वाजे ना हो, उसके लिए फिर क्या किस तरह से इस्तेमाल होगा। तो ऐसी सरफेस जो आसमान की तरफ फेस कर रही हो, जो स्काई की तरफ हो, वो डॉर्सल कहलाएगी, और जो जमीन की तरफ टुवर्ड्स अर्थ हो, वो वेंट्रल कहलाएगी। लेकिन कौन से एनिमल्स में? जिनके जो बैक और बेली वाजे ना हो, क्लियर। तो ये उनमें से एक है। सो ये ऊपर इसकी डॉर्सल सरफेस, और यहाँ पर ये सारे इसके डॉर्सल पोर्स मौजूद हैं। ये सारे डॉर्सल पोर्स, म्यूकस ग्लैंड सेल्स, जो यहाँ पे पोर्स में जो है उसमें पोर करते हैं। सो हाउ डज रेस्पिरेशन नाउ टेक्स प्लेस? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन ऐसे एयर से ऑक्सीजन ये डिफ्यूज करेगी सबसे पहले क्यूटिकल में, फिर क्यूटिकल से एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से एपिडर्मिस के अंदर ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज से वो फिर जाएगी किसमें? इट्स द मेजर ब्लड वेसल, और यहाँ से फिर वो होती हुई सर्कुलेशन में एंटर होगी। इस तरह से ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाएगी। यहाँ से ये ब्लड में जैसे एंटर होगी तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, वहाँ से फिर ये सर्कुलेट होगी और टिश्यू लेवल पे जाकर ये डिसोसिएट हो जाएगी। और टिश्यूज में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी तरह से ये कैपिलरीज से आएगी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से फिर वो डिफ्यूज करके जाएगी स्किन में, स्किन से फिर वो डिफ्यूज करके द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट, सो बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द वेंट्रल सर्फेस। ये वेंट्रल सर्फेस है, डॉर्सल सर्फेस से ऑक्सीजन एंटर हो रही है, क्लियर, एज यू कैन सी ओवर हियर, तो डिफ्यूजन हो रही है, क्लियर। सो अब हम इसको अगर आप पैचअप करें, इसको जो समराइज करें, सो तो ऑक्सीजन enters the moist cuticle by diffusion, डिफ्यूज करके अंदर आई, from cuticle it diffuses into the epidermis, from here it moves into capillaries and combine with the hemoglobin of red cells to form oxyhemoglobin, to form oxyhemoglobin, clear. So oxygen plus hemoglobin, it is reversible, it forms HbO2. This is oxyhemoglobin, clear. और फिर यहाँ से on reaching tissues, the HbO2 dissociates into O2
and hemoglobin, and oxygen then diffuses into tissues. तो यहां से टिश्यूज में वो पहुंच गई, clear, via dorsal blood vessels. जो मेजर इसकी ब्लड वेसल है ऊपर वाली, ये डॉर्सल ब्लड वेसल, clear, वहां से. And the carbon dioxide diffuses from cells into blood. यहां पर मेन में जाएगी वो वेंट्रल ब्लड वेसल में, ठीक है, into the ventral blood vessel and enters into capillaries. अब इसके नीचे स्किन आ गई, into capillaries of skin, clear, स्किन की कैपिलरीज में एंटर हो गई, from where it is diffused out, clear. तो यहां पर वाजे रहे, ऑक्सीजन जो है वो डॉर्सल सरफेस से एयर के जरिए एंटर हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड वेंट्रल सरफेस है, स्किन ही, ऊपर भी स्किन नीचे भी स्किन, वेंट्रल सरफेस डॉर्सल सरफेस, ऑक्सीजन फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिमूव्ड थ्रू द वेंट्रल सरफेस, नीचे स्किन के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स, फिर उसके बाद क्यूटिकल से होते हुए ऐसे बाहर को, चूंकि अंदर कंसंट्रेशन हाई, बाहर कंसंट्रेशन लो, सो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इट इज पुश्ड बैक, क्लियर. और यहां पर भी ब्लड के जरिए ही इसको आगे मूव करवाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है. सो दिस इज हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अर्थवर्म. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा कि अर्थवर्म के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होती है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन कॉकरोच. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.